The percentage share of the irrigated area of the Bhakra that was 15 to 16% है. ओके, इसके बाद में है द फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रोट इन वंस इन 8 ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो ये भरतपुर करवाया था. अब है सिटीजन चार्टर. तो द सिटीजन चार्टर इज जस्टिफिएबल इन द कोर्ट. तो ये जस्टिफिएबल नहीं होता है. ठीक है. कमिटमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस. Citizen charter include the expectation of organization from citizen for fulfillment of commitment. But ये justifiable होता है क्या? So that is wrong actually. So this is citizen charter is the document issued by the public service organization which define the standards of the services. It acts as a commitment by the organization to improve the service delivery, ensure transparency. Is typically include the information about the service क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टाइमलाइन, ग्रीवेंस एड्रेसल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन. ठीक है. वो एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द स्पीकर. तो ये नो बॉडी. ठीक, ये करवा दिया था. अगला है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर. तो जब भी मेंबर डिस्क्वालिफिके होगा तो ऑन सच क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल. डिस्क्वालिफिकेशन के समय गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है. And before deciding any such question, the governor shall take the opinion of the election commission and shall act according to the such opinion. तो वो किसकी ओपिनियन से करता है? तो ये है हमारे इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन जो कमीशन है इनकी ओपिनियन से वो वर्क करते हैं. ठीक है. सो दिस इज अंडर आर्टिकल 191 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली और काउंसिल बेस्ड ऑन द सर्टेन ग्राउंड सच एज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंसी, बीइंग ए सिटीजन. द प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन्वॉल्विंग गवर्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया. Article 192 of Indian Constitution specifies that if any question arises as to whether a member of the state assembly has become disqualified, अगर करना है, so the governor does not act independently while making this decision. The governor is required to consult the chief commissioner of the India and act based on the opinion as provided under 192. Despite this requirement for the consultation, the decision of the governor based on the election commission is considered final and binding. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर एंड द गवर्नर कैन नॉट डिसरिगार्ड इट वाइल मेकिंग अ डिसीजन. सो दिस constitutional safeguard ensure transparency and it is accurately reflect that constitutional process for disqualification of member of the state. Ground of the disqualification: if the member hold an office of profit under the India, any state another than office of profit, क्या होता है, unsound mind हो, member not citizen of India, has a voluntarily acquired citizenship of another country. रोल क्या होता है? इलेक्शन कमीशन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल बॉडी टू इंश्योर फेयर डिसीजंस. इट्स बाइंडिंग ओपिनियन प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररी एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन. जुडिशियल रिव्यू भी होता है. हाउ मेनी पर्सन हेल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर द राजस्थान ड्यूरिंग वसुंधरा, दैट वाज 6th गवर्नर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल 12 होती है, वैसे 30 भी मैक्सिमम है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज इनकरेक्ट. सो 11th के अंदर बताया ही था कि यहाँ पर 2020 में 25 डिस्ट्रिक्ट वाला जो था वो रॉन्ग था. नाउ फ्रॉम विच ईयर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट वाज 1984. प्रीलिम्स कब से हुए हैं? 1984 से. ठीक है. इसके बाद है वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूड फ्रेश वारंट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ द राजस्थान. तो उस समय थे कैलाश वांचू. ठीक. इसके बाद है विथ रिगार्ड टू द रूल्स ऑफ द राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ Public Service Act 2011. The rule came into the force from the 14 November 2011 and there is an exemption of fee from first or second appeal. In case of order of the payment of the compensation, the second appellate authority shall order to make payment within 30 days, not the 60 days, and that was the guarantee delivery services. Okay, next one is which of the following has no role in the constitutional राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब लीगल रोल नहीं होता है यहाँ.
नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें बताना था स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल। पहले थे हीरालाल जी देवपुरा, देन मानिकचंद, देन सुराना, के बाद में थे बी.डी. कल्ला जी। सो द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी अंडर आर्टिकल 243I and its primary role is recommendation distribution of financial resources between the state government and local self-government institutions such as the Panchayati Raj urban local body. It constituted every 5 years by the respective state government. Recommendation influence fiscal decentralization and the efficient utilization of the resources. So each chairman played a significant role advising to the state government on the financial matter, improving financial governance. Their contribution helped shape fiscal policy and strengthen the financial autonomy. The establishment of the Finance Commission is critical for promoting fiscal federalism and accountability. As per the Constitution, states are required to constitute these commissions regularly to ensure the effective financial allocation. According to the Guide of the Right to Information, which of the following is not basic objective? To promote democracy and diversity नहीं होता है, to empower citizen, contain the corruption and promote the transparency. But promote democracy वाला part नहीं है. RTI Act was enacted by the Government of India to promote transparency. Act empowers citizens to seek information from public authority, enhancing the public participation. Democracy request by the government inform ensure the information accessible to public. Statement to promote the democracy and the diversity. And while act indirectly contribute to the promote the democracy by empowering them. A key objective of RTI Act is to empower citizens by providing them the right access information, and this empowerment allow individual to hold the government accountable and bridge the information gap between them. RTI Act is the powerful tool to combat corruption and making information accessible. It reduces the scope of secrecy, misuse of power. Citizen can use the act to expose irregularities and demand accountability. The RTI aim to promote transparency, accountability of the officials. वसंत राव पाटिल, अब यहाँ पे कुछ मतलब दिया हुआ था है ना, उसका आंसर बता देते हैं हम कि ये गवर्नर थे और ये मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान थे, सीएम। तो वसंत जब राव पाटिल जी थे उस समय हरदेव जोशी थे। प्रभा राव जब आई थी तब अशोक गहलोत थे। राम नायक जी आए थे तब वसुंधरा राजे अगेन। तो वसुंधरा जी कब थी? राम नायक के टाइम में भी थी। और दरबारा सिंह के समय थे बेरू सिंह जी शेखावत जी। ठीक है, तो गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर रिलेशनशिप क्या होती है? द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्ले सेरेमनियल रोल. चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये इलेक्टेड हेड होते हैं. इन द क्वेश्चन द गिवन गवर्नर एंड सीएम ऑफ द राजस्थान आर मेज्ड बेस्ड ऑन देयर टेन्योर एंड हिस्टोरिकल एसोसिएशन. वसंतराव पाटिल, हरदेव जोशी. वसंतराव पाटिल सर्व इज द गवर्नर ऑफ द राजस्थान फ्रॉम 85 to 87. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम हरदेव जोशी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान. प्रभा राव एंड अशोक गहलोत. प्रभा राव सर्व एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान 2009 and 10. ड्यूरिंग हर टेन्योर अशोक गहलोत वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान 2008 से 13. राम नायक एंड वसुंधरा राजे. राम नायक वॉज द briefly served as the acting governor of the Rajasthan in 14. At that time वसुंधरा राजे was the chief minister. ठीक है, दरबारा सिंह के समय कौन थे? दैट वाज ड्यूरिंग द बेरो सिंह शेखावत वाज द सीएम इन 93 एंड 98 की बात है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी क्रिएटेड? तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीट का पोस्ट आया था 2004 में. So the post of additional chief secretariat was created by Chief Minister Office of Rajasthan. This administrative restructuring the aim strengthen the Chief Minister Office and ensure better coordination. So DC Samant as his first additional chief secretary in 2004 and the Rajasthan. So serve as the senior most officer assisting the CM mandating administrative task and coordination. So name was what? Additional chief secretary was created the Chief Minister Office. And DC सामंत was the first additional chief secretary in the 2004. तो DC सामंत जी थे, that was the first कौन थे? additional chief secretary थे 2004 में. ठीक है, now the creation of the additional chief secretary post reflect the growing needs for the specialized and the senior level administrative role. Rajasthan moves to appoint ACS was part of the broader administrative reform being implemented across various Indian states to improve the efficiency. DC Samant appointments as the first ACS in Rajasthan Chief Minister Office set a precedent for strengthening the institutional framework within the
गवर्नमेंट. सो दैट वाज द DC सामंत अपॉइंटमेंट हुआ था इनका. ठीक है. नेक्स्ट, टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूंट गवर्नर द पावर इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है. सो आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू स्टेट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस when the state legislation is not in session and the circumstances arises that required immediate legislative action, the power is exercised by the governor based on their discretion. And state council of minister headed by the chief minister, ordinance issued by the governor have the same force and effect as a law passed by the legislature. So the governor ordinance making power is the subject to judicial review also. The ordinance making power of the governor is not a right in the sense of the entitlement, but it is a constitutional authority to governor to address urgent legislative needs, unlike which is inherent. So the governor is not under an obligation to promulgate ordinance. It is a discretionary power exercised based on the advice by the council of ministers, and an obligation would be imply mandatory duty. So while the issuance of the ordinance is part of the governor's role, it is not merely the function, but functions are routine tasks. So this power exercise only in a specific situation. Next, which subject is not mentioned in the 243W? तो यहाँ पर बर्थ से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स होता है, रोड फायर सर्विस होगा, बट मार्केट एंड फेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड. So Article 243W 12 schedule of the Constitution, that was 18 subject है इसमें, and market and fair however are not explicitly mentioned, but municipality may indirectly facilitate the activities related to the market and fair. Okay, so this is not included in that. Next one, how many judgeship fall under the jurisdiction of Rajasthan High Court principal seat? That was 19. So how many judgeship fall under the jurisdiction of Rajasthan High Court principal seat? तो कितने हैं? That was 19 judgeship में. ठीक है. The Rajasthan High Court has 2 benches of the principal seat of Jodhpur and Jaipur. Principal seat of Jodhpur has jurisdiction 19 judgeship administrative unit, western and southern. The division ensure the efficient functioning, and it was the principal seat at the Jodhpur include the districts such as Jodhpur, Barmer, Jaisalmer and the Pali. Now general review करेंगे. The Rajasthan High Court was establishing in 1949 following the merger of the princely states. So it has a 2 permanent bench to manage the vast geographical areas. ठीक है. The principal seat of Jodhpur handle cases from the western and southern district of Rajasthan, while the Jaipur bench cater to the eastern and northern. Rajasthan High Court has a sanctions strength of judges who are allocated between the 2 benches to ensure the smooth functioning of judiciary. The jurisdiction division between Jodhpur, Jaipur based on the administrative convenience and the geographical proximity. Consider the following statement regarding the suggestions given by the Rajasthan Administrative Reform Committee. So ये जो कमिटी है पहला है इसका appointments for the post of secretary should not be more than 3 years. 3 years से ज़्यादा इसका appointment ना हो. Merit alone, not seniority, should be the basis for the appointments of the secrecy. तो दोनों ही होंगे यहाँ पे. तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी आई थी. मेरिट अलोन, नॉट सीनियोरिटी. नहीं, सीनियोरिटी भी होता है. ठीक है. एंड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी शुड नॉट मोर देन 3 years. दैट इज रॉन्ग. तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी established to recommend the measure for improving the efficiency of the government. Secretary play crucial role in the government providing policy, advice and support. The committee recommendation were aimed at addressing inefficiency, ensuring it was the Rajasthan Reform Commission did not specify recommend limiting the tenure maximum 3 years. The general administration recommendation was ensuring stability, allow the continuity in the policy implementation. Arbitrary times restrictions such as fixed 3-year tenure may disrupt the continuity, but the focus of the reform is often on the appointing capable individual with proven expertise. Next, this is statement is while the committee is emphasizing improving the administrative efficiency, did not explicitly advocate for the merit alone. मेरिट के साथ में एक और चीज़ भी होती है. ठीक है. द राजस्थान एडमिन रिफॉर्म कमेटी मेड सेवरल रिकमेंडेशंस in the Indian admin context. IAS officer who are appointed based on the combination of seniority, experience and the performance. And reforms committee ARC India is often focused on the broader issue like the reducing bureaucratic delays, enhancing transparency and efficiency. Under which of the article Indian Constitution state government is mandatory required to consult the Rajasthan Public Service Commission for public servants को promote करने के लिए. तो 320A 3
ओके यहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होता है कि वो कंसल्ट करे, किससे, आरपीएससी से कंसल्ट करे कि प्रमोशन करना है या नहीं करना है. सो द अंडर आर्टिकल 320 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर बोथ. This article specifies the mandate that the state public service commission such as Rajasthan Public Service Commission must be consulted on certain matters including promote करना, transfer करना. The constitution ensured that the state government seeks to advise for the RPSC to maintain transparency, fairness and the meritocracy, and while the advice provided by this is not binding, एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, बट इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द इंश्योरिंग दैट डिसीजंस आर मेड इम्पार्शली and procedure be impartial. Article 145 is pertain to rules of procedure for the Supreme Courts and including the quorum, and it is unrelated to the functioning of the State Public Service Commission. Next, Article 300A guarantee the right to property by the, यहाँ पर तो क्या था, कोरम से रिलेटेड मैटर आ गया 45 के अंदर, 145 के अंदर. 300A guarantee the right to property by the stating that no person shall be deprived of property. आर्टिकल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी. 245 में आता है डील विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट एंड देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. So specially address the extent of law made by Parliament, clarifying that such law cannot be questioned. Article is no connection with the consultation of this. Who among the following head of the governing body of the society, social audit, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दैट वाज चीफ सेक्रेटरी इसका हेड है. ठीक है, तो द चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर चीफ मिनिस्टर एंड इज ए गवर्निंग बॉडी फॉर द सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट and accountability and transparency. Chief Secretary ensures that the objective of the society align with state policy and administrative priorities. SAT is established to promote the transparency, accountability and social audits. Chief Secretary oversee the functioning, ensure the implementation effective social audit practices. So that was the Chief Secretary is the elected head of the elected head होता है ये, responsible for overall governance and policy. Chief Secretaries play a pivotal role approving the supporting initiative, like they delegate the operational responsibility and it practice the chief minister provide the strategic leadership. So the director of SAT is responsible managing daily operations of the society, implementing social audits and ensuring program effectiveness, while the director play a critical role, so they report to the governing body which is chaired by the chief secretariat. So SAT is a governmental supported initiative aimed promoting transparency, accountability, conduct the social audits and NREGA to ensure proper utilization of fund, empower the local community to actively participate. Social audit is also important because social audit is participatory process where stakeholder particularly benefits to examine this. Now as per the livestock census, what is the percentage of the country livestock does Rajasthan have? दैट इज़ 10.60%. कितना परसेंट लाइव स्टॉक है राजस्थान में? 10.60% टोटल हमारे पास लाइव स्टॉक है. ठीक है, सो एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 10.60% टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन. दिस मेक्स राजस्थान वन ऑफ द लीडिंग स्टेट ऑफ द लाइव स्टॉक्स रियरिंग. And livestock include the cattle, buffalo, sheep, goats, pigs, and the state is home to the hardy indigenous breed like the Tharparkar, Rathi, and Marwari, Bikaneri camel. Okay, so the state is home to the Rajasthan play vital role for the milk production, and now the state government has implemented several schemes for supporting this livestock. Emphasis laid on the fodder development and drought ensure the survival of the livestock. Okay, national context, India is the world largest producer of milk and one of the top country in the livestock population, contributing to the global dairy and meat. State like Uttar Pradesh and Rajasthan, Madhya Pradesh. Okay, livestock census is conducted every 5 years. Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fishery and the Animal Husbandry. Livestock census is conducted every 5 years, and the 20th livestock census recorded total 535.78 million livestock in India. That was marking increase 4.6%. कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4.6% का. ठीक है, और अभी कितना है? 10.60% टोटल कंट्रीब्यूशन है राजस्थान का लाइव स्टॉक में.
Under Ladu Protsahan Yojana, on the birth of the girl child, what amount of the saving bond is given to the poor family? So that is the 1 lakh rupees. Okay, 1 lakh rupees. So the Ladu Protsahan Yojana is a government initiative aimed at the promoting welfare of girl child. Under the scheme, financial assistance provided to the poor family in the form of the saving bond to celebrate the birth of the girl child. The correct amount of the saving bonds are 1 lakh, which is intended to support the family and encourage them to invest in the education and well-being. This scheme part of the government broader effort to combat gender inequality, and the Ladu Protsahan is an important step bridging the gender gap, promoting equality. The scheme not only provides the financial assistance but also aims change societal attitude towards the girl children and encouraging the family values also. Such initiatives are crucial for addressing issues like female infanticide, child marriage, gender-based discrimination, and receive the saving bonds are encouraged to invest in the girl children education and the future. Which of the following agency is providing financial assistance for Rajasthan State Highway Development? That was World Bank. So the World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to government of low and middle income countries. It focuses reducing the poverty, building the sustainable development, funding health. In case of the Rajasthan State Highway Development Project, the World Bank providing the financial assistance for modernizing of the highway. Okay. Now JICA जो है, JICA is also working for development for the technical cooperation, and JICA has been involved in various infra development projects. JICA focus on more sector like transportation, sanitation, disaster risk. ठीक है. Now next है एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये जो है ये फिलीपींस में है. दैट सपोर्ट द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ एंड इंफ्रा डेवलपमेंट करना हो, इंक्लूडिंग द रोड हो गया या फिर हाईवे डेवलपमेंट हो गया. ठीक है. फंडिंग एजेंसी फॉर द राजस्थान. एडीबी फोकस ऑन द इंडिया हैज़ इंक्लूडेड अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ट्रांसपोर्टेशन. इसमें आप अर्बन डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी हो जाएगी आपकी, और एनर्जी हो गया, अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन. इन तीनों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दैट इज़ नोन एज अ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एंड एस्टेब्लिशिंग बाय द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना. Sustainable development projects. Although the NDB is actively involved in the financial infrastructure project in India, not the agency providing financial assistance to the Rajasthan highway development को ये नहीं दे रही है, लेकिन ये इन्वॉल्व होती है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में. As per the Rajasthan modified budget of the July, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर. ये सेंटर कहाँ है? ये है जयपुर में. Okay, in the modified budget, Rajasthan announced the establishment of Amrit Global Technology Center in Jaipur. The purpose of this center is to promote the technological research, innovation, and the Jaipur being a capacity city, the center aims to foster global collaboration of the providing platform for the startup. Okay, now the Ajmer is primarily known for the हिस्टोरिकल रिलीजियस सिग्निफिकेंट. द अजमेर शरीफ वॉज दरगाह है यहाँ पर. उदयपुर में लेक्स हैं, पैलेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं. जोधपुर को हम ब्लू सिटी बोलते हैं. इट इज़ हैव इमर्जिंग एजुकेशनिस्ट इंस्टीट्यूशन. व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑफ टोटल राजस्थान? तो ये है हमारा 9.54%. The handicraft sector of the contributed 9.54% total export. This is significant contribution showcasing the importance of the handicraft industry and it's renowned for its rich culture and traditional craftsmanship. So that is important thing. Rajasthan is handicraft for the key driver to the rural development, women empowerment and contribute to the preservation. Skill play a vital role promoting Rajasthan cultural identity also. Okay. Now next one is which of the following is correct about the Chief Minister Corona Sahayata Yojana? So this Corona Sahayata Yojana जो दी गई है, the Chief Minister's Corona Sahayata Yojana is operational in the entire state in 25 and under the scheme a lump sum assistance is 1 lakh rupees is payable to each orphan boys and girls as per the immediate assistance is 2500 per month is given. Until age of 18 2000 is given annually. So this is around 1 lakh rupees दिए जाएंगे, जिसमें से 2500 रुपये एंड 2000 रुपये. ओके.
So the CM Corona Sahayata Yojana is launched to provide the financial assistance to children who lost their parent. This initiative ensured that the affected children receive immediate and long-term support. And now next, this is correct about the CM Corona Sahayata Yojana. The scheme was introduced in response to COVID-19 pandemic, which resulted loss of many lives and livings of children. By making the scheme operational statewide, the government ensured that all eligible children could access benefits, and statewide implementation reflect the commitment to addressing the challenges. Okay. Now 1 lakh rupees is payable to each orphan, and immediate assistance like 2500 for per month given till the age of 18th, and 2000 is given the annually. Now, for what purpose one stop shop facility has been established? So, to strengthen the single window clearances for the investment promotion, one stop shop बनाई जाती है. This is for the single window. So, the one stop shop was facility in the Rajasthan has been established to streamline the simplify the process of obtaining government clearances. It aimed to promoting ease of doing businesses. This is the ensure that investor business can access all the required permission, licenses, and single platform. Next one is this option is incorrect. One stop shop facility in Rajasthan is not specified for the agriculture marketing. इसको हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए नहीं रखा है. वेल एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सेक्टर, बट एग्रीकल्चर सेपरेट स्कीम वॉज E-NAM. Okay. E-NAM is this. To centralizing all government clearances regarding the establishment of industry is one of important for this. Now next one is, as per the Rajasthan modified budget, to promote the green growth, the prevalent rate of weight on has been reduced by 14.5% to. तो ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है. ठीक है. राजस्थान मॉडिफाइड बजट ऑफ द जुलाई टू प्रमोट द ग्रीन ग्रोथ. ग्रीन ग्रोथ में हमने CNG और PNG हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 14 टू कितना आ गया, ग्रीन बजट में आ गया है 10%. 14 टू कितना आ गया हमारे पास अब 10%. ठीक है. सो द एज पर द राजस्थान मॉडिफाइड बजट प्रेजेंटेड वेट वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द CNG and PNG has been reduced 14 to 10%, and this reduction is aimed to promoting green growth and encouraging use of the cleaner environment friendly fuel and considered eco-friendly alternative to conventional fossil fuel like petrol and diesel, and the policy reflects the state commitment to adopting sustainable practices. Lower weight is rate makes CNG more affordable, and the move is expected to benefit industry, household and transportation. Tax reduction policy like these are essential for the fostering sustainable energy ecosystem. Now next question है, माँ voucher scheme has been started to give free sonography facility, and लखपति दीदी योजना has been started for economically empowerment of the women. तो दोनों ही सही है. माँ वाउचर से आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाएंगे प्राइवेट. ठीक है. सोनोग्राफी फ्री हो जाएगी यहाँ पे, और लखपति दीदी में आपने इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट कर दिया. ठीक है. So both are true actually. Next one is, as per the Rajasthan modified budget, under which following scheme Adarsh Saur Gram will be made in the East district. So Adarsh Saur Gram जो था PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आदर्श सौर ग्राम वॉज अंडर द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली. सूर्यघर से मुफ्त बिजली मिल रही है, दैट इज द आदर्श सौर ग्राम. So under the scheme, the Rajasthan government aimed to establish the Adarsh Sogram, and this was the village with showcase the sustainable energy practice by harnessing solar energy for electricity generation and agriculture purpose. This initiative is designed to promote the renewable energy, reduce the dependency conventional electricity. Beneficiary under this scheme will be provided subsidy and the support to the solar panels. Okay, हर घर हर खेत बिजली, that was electricity connectivity to every household, and it's primarily address the infra development for the electricity distribution. And Adarsh Saur Gram is while contributing to improving the electricity access. And Saur Krishi Ajivika Yojana, this scheme is meant promoting solar energy for agri use. ठीक है. And Saur Krishi Ajivika Yojana, this scheme aimed at promoting solar energy for agri use and including the irrigation and farming activity. तो जितनी भी इरिगेशन और फार्मिंग की एक्टिविटी है उसके लिए भी आप सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है.
सोलर सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं, दैट इज़ फॉर द सोलर सिस्टम प्राइमली टारगेटिंग द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूजेस. व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनुअल इनकम लिमिट फॉर द पेरेंट्स, गार्जियन एंड द सेल ऑफ स्पेशली एबल्ड के लिए कितना मनी है, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. ठीक है, तो मैक्सिमम एनुअल इनकम लिमिट फॉर पेरेंट, गार्जियन एंड सेल्फ ऑफ द स्पेशली एबल्ड के लिए दिए गए हैं 2 लाख रुपए. तो दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पेशली abled person to help them establish self-employment, and the initiative is specially targeted towards the individual with disability to promote their economical independence. Eligibility under this scheme include both the specially abled and their parents. So that was 2 lakh rupees. In which city the MedTech medical device park has been developed in रिको. तो जोधपुर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है. सो नेम इज़ MedTech पार्क, MedTech मेडिकल डिवाइस. ठीक है, एंड दैट इज़ इन द जोधपुर. MedTech पार्क इन द जोधपुर. सो दैट वाज being developed by the Rajasthan State Industrial RICO. Its major initiative aimed to boosting the medical devices, therefore positioning state hub for the medical technology. And this park equipped with the state-of-art infrastructure expected to attract the investment also. Ajmer is the known city for the historical cultural significance, and Kota renowned for educational hub है. मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अजमेर में नहीं है वैसे. ठीक है, एंड कोटा तो पता ही है, अलवर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है हमारी, प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली होने की वजह से. हाउ इज़ द श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इन रूरल टाउन बाय द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू द राजीविका. तो अन्नपूर्णा रसोई योजना दैट वाज ऑपरेटेड बाय रूरल टाउन, इट वाज बाय द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू द राजीविका. राजीविका है, तो राजीविका से ही क्या है, अन्नपूर्णा की रसोई बनाई गई है, राजीविका. ओके, सो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना फॉर्मली नॉन द इंदिरा रसोई इज a welfare scheme and Rajasthan government to provide the subsidized meal. Under the women self-help group was the Rajivika, which is the Rajasthan Gramin Ajivika Vikas Parishad. Okay, local NGOs are play a vital role community welfare for the Shri Annapurna Rasoi, especially for women, and NGO might assist in supporting the similar initiative. Government agencies, money schemes and the fundings guidelines are also providing here. Private companies are typically involved large scale commercial operations. Rajasthan Agro Processing, Agri Business and Agri Export Promotion Policy has been launched. It is increasing efforts of the land reform. तो जितनी भी एग्री प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस दैट इज़ फॉर द लैंड रिफॉर्म के लिए. सो राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है दैट बूस्टिंग द एग्रो प्रोसेसिंग and it is for improving the value chain for the agriculture products and post service losses को reduce करना. skill development and cluster based approaches is also there. Okay, so this is for the land reform. Cluster based approach, this policy aim to minimize the post service losses. Cluster are a group of the farmers and stakeholder in a specified region focusing on the cultivation, and such as approaches promote the efficiency, transportation, reducing wastage and cluster based development. Empowerment of the generation and skill development is also there. So this is involving the directly value addition and supply chain processes. Farmers are encouraged to participate in processing activities and a higher share for the profit also. Now, which is the following subsector of the agriculture allied sector for the maximum Rajasthan gross state value added, that was livestock का सबसे ज़्यादा है. किसका है सबसे ज़्यादा? That is the livestock sector. Okay, so livestock is the largest contributor to the Rajasthan gross state value added, and Rajasthan holds a significant portion in the livestock production in India, being one of the leading state. They include the activities such as the dairy, poultry and wool, meat. Rajasthan is particularly known for the dairy industry, milk production and the economy. So that was Rathi, Gir, many types of the cows are there. Livestock sector is providing the livestock opportunity to the large proportion of the rural area. Initiatives such as the subsidy, veterinary service and the infra projects. So crops also contribute to significantly to Rajasthan, but their share is lower. But now Rajasthan crop production is heavily influencing the arid and semi-arid and the climatic conditions are also there. Okay,
नाउ नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट फिशरी एंड लॉजिंग हो रहा है. सो दिस इज राजस्थान. ड्यू टू द स्टेट जोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट लॉजिंग एक्टिविटीज आर लिमिटेड. सो फिशिंग इज नॉट ए मेजर एक्टिविटी. फॉरेस्ट्री लॉजिंग एज ए स्टैंडर्ड सब सेक्टर्स हैं GSBA के. एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट ऑफ द स्टेट्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट. नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. 3 सब मिशन है इसमें. सब मिशन ऑन द सीड है, एग्रीकल्चर और मैकेनाइजेशन है. पहला है सीड का मिशन, फिर है एग्रीकल्चर का मिशन और उसके बाद है मैकेनाइजेशन का मिशन. ठीक है, तो ये 3 मिशन है इसमें. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान. So it's aim to make Indian agriculture more sustainable, climate resilient and productive. This is submission under this that focus on promoting sustainable agriculture. Rainfed area development, it was promoting sustainable agriculture for the rainfed area. And submission for agroforestry, tree plantation on the farmland along with the crops enhance the biodiversity. And soil testing and the soil health cards बनाए जाते हैं. Then submission on the seed and agriculture mechanization. Additional है promoting the efficient utilization of the national resource, enhance the capacity to the cope with the climate, developing sustainable agriculture. Soil health management was a long-term facility productivity of the agri land, reduce dependency of the chemical inputs and promote the organic farming. This turn the contribute to the sustainable and the environment friendly agriculture. Okay, the 2 topmost products of the export from Rajasthan, that was engineering goods, gems and jewelry. तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है. फर्स्ट इज़ द इंजीनियरिंग गुड एंड सेकंड वाज द जेम्स एंड ज्वेलरी. engineering and gems and jewelry. Okay, so engineering goods are major export of the category due to the state growing industrial base, and produced under the category include the automotive components, machinery, pumps. This state has been successful creating the ecosystem. Rajasthan has a long standing reputation for the expertise in cutting, polishing and designing gemstone. नेक्स्ट है कि टेक्सटाइल एंड केमिकल अलाइड एरिया जो है, दैट वाज राजस्थान इज़ नोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नाउ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ राजस्थान दैट फैसिलिटेट लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, दैट वाज ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. क्या है ये? ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का एक ब्यूरो है, that is very important for this. So the Bureau of Investment Promotion was a designed to agency government of Rajasthan, facilitating promoting large scale investment. Agency focus on attracting the investment in IT and renewable energy, and single window clearances will also be there. Okay, single window clearance, obtaining all requisite approval of the clearances and facilitate approval. Industrial Investment Promotion Council. Okay, now next one is state empowered committee for the large investment is also. How much subsidy provided under the PM कुसुम योजना? तो 60% जो है कंपोनेंट बी को दिया गया है. ठीक है, सो द PM कुसुम योजना फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी providing solar powered solution, and under this P scheme individual farmer are supported to install the solar pump for Rajasthan subsidy of the 60%. So objective PM Kusum, the scheme aim to enhance the farmer income, promote use of the renewable energy, environment impact by promoting the solar pumps, and the scheme significantly for the greenhouse gas emission को कैसे हमें reduce करना है. ठीक है, What benefit does आस्था कार्ड प्रोवाइड द एलिजिबल फैमिली? आस्था कार्ड जो है बेनिफिट ऑफ द BPL कार्ड होल्डर. तो जितने भी BPL कार्ड होल्डर हैं, BPL कार्ड होल्डर वाले, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द आस्था कार्ड. आस्था कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, नाउ आस्था इज द वेलफेयर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम द प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. प्राइमरली बेनिफिट ऑफ द आस्था इज एक्सटेंड टू द ऑल एडवांटेज इन द बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी हैं. ठीक है, सो दैट इज़ ओके. फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर द राइट टू एजुकेशन हो गया एक तो. एंड इंश्योर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर के जो हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है. हाउसिंग सब्सिडीज आर ऑफन प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है, एंड नेक्स्ट है फ्री हेल्थ केयर दैट वाज ऑफर्ड फॉर द गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक आयुष्मान भारत.
The Rajasthan main team defeated which is the following team is final of the 74 junior national basketball, that was Chandigarh. So Rajasthan men's team defeated which of the following team is the final of the 74 junior national basketball में Chandigarh was this. Next is recently the military station of India has constructed road by the using plastic waste and they become second मिलिट्री स्टेशन. इसको हम जयपुर मिलिट्री स्टेशन बोलेंगे, ठीक है. तो जयपुर जो स्टेशन है दैट वाज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड फॉर द रोड यूजिंग द प्लास्टिक वेस्ट. ओके, एंड मेथड ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग रिसाइकलिंग द प्लास्टिक एंड दैट इज मोर रेजिस्टेंस इन टू वाटर डैमेज हो जाता है, डील विद द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट है जोधपुर जो है दैट इज जोधपुर इज अ प्रोमिनेंट मिलिट्री स्टेशन हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड अडॉप्ट प्लास्टिक वेस्ट. Bikaner, like similar to Jodhpur, Bikaner military station has significant presence in the defense sector but has not been recognizing for constructing the roads. ठीक है. Udaipur is a while notable but not been reported engage in the this type of activity. The name of the officer who attend the first position Rajasthan in the मेरी कहानी मेरी जुबानी विकसित भारत संकल्प यात्रा. मेरी कहानी मेरी जुबानी that was लोक बंधु. So मेरी कहानी मेरी जुबानी is a storytelling and Viksit Bharat Sankalp aim at capturing the sharing inspiring stories. The initiative seeks to motivate others, highlighting the exemplary contribution towards the national development. So Lok Bandhu is the officer who has demonstrated outstanding commitment to the public service. His story मेरी कहानी मेरी जुबानी is likely resonated due to its impactful message to the result of societal development. Ankit Singh is another officer whose name might be appear in the similar context but did not secure the first position. राजस्थान में मेरी कहानी मेरी जुबानी एंड अंकित सिंह का अलग कंट्रीब्यूशन था. कुमार उल जामल चौधरी दैट वाज also not associated with this. But now for which of the following event did Anantjeet Singh Naruka and Maheshwari Chauhan qualified for Paris Olympic? दैट वॉज स्किट के लिए ये लोग क्वालिफाइड हुए हैं. अनंतजीत एंड द महेश्वरी चौहान बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द स्किट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन राजस्थान एज ए कंपेयर टू द लोकसभा जनरल इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा कंस्टिट्यूंसी द परसेंटेज ऑफ वोटिंग हैज़ बिन रिकॉर्डेड इंक्रीज. तो सबसे पहले बाड़मेर, फिर कोटा, फिर बांसवाड़ा. अजमेर में नहीं है ना. तो लोकसभा जनरल इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा कंस्टिट्यूंसी द परसेंटेज ऑफ द वोटिंग रिकॉर्ड की गई है बाड़मेर, कोटा एंड द बांसवाड़ा. बाड़मेर में सबसे ज़्यादा, फिर कोटा में और फिर बांसवाड़ा में. ठीक है. अजमेर डिड नॉट इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वोटिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज वोटर टर्नआउट को क्या अफेक्ट कर रहा है दैट. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम द नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड दैट वॉज इन द रेलवे स्टेडियम जयपुर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच परसेंटेज वोटिंग अंडर होम वोटिंग हैड टेकन प्लेस राजस्थान इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन. तो होम वोटिंग में कितना परसेंट इलेक्शन है दैट वॉज 98.39%. दिस इज़ द होम इलेक्शन. ठीक है, होम वोटिंग. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ होम वोटिंग रेफर टू द फैसिलिटेट ट्रेडिंग सर्टेन ग्रुप ऑफ द वोटर्स सच एज द सीनियर सिटीजन्स. It is a significant step toward the inclusive election, ensuring that no eligible voter is deprived of any kind of vote due to physical and the logistic barrier. And now there is 98.39% percentage voting under the home voting facility of the Rajasthan during the Lok Sabha election. नेक्स्ट है हमारे पास में होम वोटिंग होता क्या है. होम वोटिंग सिस्टम इज़ ए ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट्स by Election Commission of India to promote voter inclusivity and ensure that every eligible individual can exercise their democratic right. It involves the meticulous planning including the voter registration for the facility for doorstep verification होता है. Such initiatives are pivotal in increasing the voter turnout and enhancing the legitimacy of the democratic process. ठीक है. Next day, what was the theme of the International Day of Yoga? Yoga for Self and Society. ठीक है. सो द योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी एम्फेसाइजिंग हाउ योगा सर्व्स एज ए टूल
and it's highlight the dual role of the yoga in promoting the personal well-being and fostering the harmony. This theme underscores the interconnectedness between the individual health and collective society. Okay, and this theme underscored the interconnected between the individual and the collective society. Yoga for the Vasudeva Kutumbakam, and that was the world is one family, and it was symbolizing universal togetherness, peace, philosophy, unity, interconnectedness. Concept reflect the global harmony. This theme was previously adopted during the International Day of Yoga to emphasize role of yoga addressing global challenges. And now next is, what was the final score of the final match between Haryana and Rajasthan? So that was 35 and 33. ठीक है, 35 and 33. So now next question is, who has been selected for the Sahitya Akademi Yuva Puraskar Poetic शुद्ध सोदुन जग अंगाने? ये सोनाली सुथार ने लिखा था, शुद्ध सोदुन जग अंगाने. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, who took over the command of the Sapt Shakti command located in Jaipur? That was Manjinder Singh. Lieutenant Manjinder Singh ने दिया था ये. Now next one, as per the budget announcement for 2024, राजस्थान स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक. तो सिरेमिक वाला तो बीकानेर में, और रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए कहाँ पर? उदयपुर में. सिरेमिक तो कहाँ पर? बीकानेर में, और रेयर अर्थ के लिए कहाँ पर? उदयपुर में. ठीक है. सो राजस्थान स्टेट बजट में किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द सिरेमिक इन द बीकानेर एंड रेयर अर्थ इन द उदयपुर. Recently, in which village the Bogra Brigade of Konak Corps of Indian Army has been started? So that is चूली बाड़मेर के अंदर. तो ये क्या है? बोगरा ब्रिज, एंड इट वाज नीव प्रोजेक्ट है. कौन सा प्रोजेक्ट है? नीव प्रोजेक्ट है ये. नीव प्रोजेक्ट इज बोगरा ब्रिज ऑफ द कोनाक कॉर्प ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड दैट वाज इन द चूली बाड़मेर. ओके. Now, Indian Army Konak Corps, especially for the Bogra Brigade, initiated new project, and it was focusing education, skill development, self-reliance, and army broader effort to promote community development, and it's also village Chuli in the Barmer. Okay, now next is Chuli Barmer is because of located in the Rajasthan Thar desert region में is face significant social economical challenges including the education for girls. This selection of the Chuli project will be the new project was strategic and allow the focus effort to address the gender disparity. Where will the second Kharmor breeding center establish? खरमोर ब्रीडिंग सेंटर दैट वाज अंता तहसील बारा में. ठीक है, बारा के अंदर है. क्या है? खरमोर ब्रीडिंग सेंटर. नाउ द खरमोर ऑल्सो नोन फॉर द लेजर फ्लोरिकन इज a critical endangered bird, and it is known for the unique dance, and this conserve the species. Rajasthan has taken the initiative to breeding center, that was Bara district, offer the appropriate natural habitat. and बिनाए तहसील अजमेर में भी है, लेकिन वो जो ब्रीडिंग सेंटर दैट इज इन द खरमोर. Now, who is the following appointed chairman of the committee on the petition of Rajasthan Legislative Assembly? तो ये petition की जो committee है that was हमीर सिंह बायल. So Hamir Singh Bail is appointed the chairman of the committee of petition, and it is an essential body for the framework primarily responsible examining the addressing petition by the citizen regarding the governance, public grievances, and Bail appointment significant. The trust placed in him to lead the important committee ensuring transparency and the accountability. So Sadachar committee was the chairman was Harish Chaudhary. ठीक है, एंड कमेटी रिलेटेड टू लोकल बॉडी पंचायती राज से रिलेटेड जो थी जुबेर खान, कालू राम, राम स्वरूप, ये सारी कमेटीज़ हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बजट ऑफ द राजस्थान इज प्रोविजन इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर द मेडिकल एंड हेल्थ के लिए? दैट वाज द 8.26% है, जो कि किसके लिए है? मेडिकल और मेडिकल के लिए. ठीक है, मेडिकल एंड हेल्थ के लिए. तो मेडिकल और हेल्थ के लिए कितना है? 8.26% of the budget है ना. So that was the financial year the government of Rajasthan allocated 8.26% of total budget. This highlights the state government commitment to improving healthcare infra service accessibility. The allocation include the funding for hospital, public health scheme, medical education, strengthening primary health, expansion of specialist service in the government hospital.
ठीक है। हेल्थ इज क्रिटिकल सेक्टर, द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स and economical productivity. Investment in health infra and the services is vital for the addressing the challenges. Now with respect to the Rajasthan proposed MSME policy, MSME policy जो है एंड देखो 50 क्लस्टर ऑफ द हैंडलूम्स हैं यहाँ पे MSME में 3 years में. ड्यूरिंग दिस ईयर द फर्स्ट फेज ऑफ 50 crore rupees spent. दैट इज़ नॉट ट्रू. But the MSME Development Facilitation Center of the East District will made more facility for making them information enabled. That is also not true. तो ये 3 साल की जो पॉलिसी है राजस्थान में है. ड्यूरिंग दिस 25 क्लस्टर है क्या? नहीं है. MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ विल बी मेड मोर फैसिलिटी इक्विप्ड बाय मेकिंग इन्फॉर्मेशन enabled. दैट इज़ नॉट ट्रू. सो 50 क्लस्टर, टोटल 50 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं. ठीक है, सी 50 क्लस्टर्स हैं, है ना. तो 3 साल में बनाए जाएंगे. अंडर दिस पॉलिसी 50 क्लस्टर्स आर span 3 year which will provide the boost to local industry and employment. Cluster development will include the infra and access to the raw material also. During this the first phase of 50 crore rupees will be spent for the 25 cluster. तो यहाँ पे 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं. कितने? 50 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं और ये दिए गए हैं कितने क्लस्टर्स को? दैट वाज द 25 क्लस्टर्स को. एंड दिस द पॉलिसी डज नॉट स्पेसिफाई द एलोकेशन ऑफ दिस बट क्लस्टर के अंदर अब देख लेते हैं. MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट विल बी मेड मोर फैसिलिटी इक्विप्ड बाय द मेकिंग दम इंफॉर्मेशन इनेबल. दैट इज़ रॉन्ग. अब आते हैं आगे की ओर. Recently, appointments of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner of Rajasthan have been made. Which of the following name is not included? So that was Ashok Kumar Parekh. So recently, appointments of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner of Rajasthan has been made. That was the Ashok Kumar Parekh, है ना, not included in that. Now consider the following about the. अब ये है क्या? इसमें मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा और सुरेश चंद्र गुप्ता तो रह चुके हैं, बट ये अशोक कुमार पारेख नहीं है. तो देख लो, राजस्थान चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द पार्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन. और यहाँ अशोक कुमार पारेख नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन. तो ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया स्टोन मार्ट. इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान इज प्रोसीड 5 February 2026. For its organization, CDOS and Lagu Udyog Bharti have recently signed MOU. दिस विल बी 12th edition. तो 12th edition ये नहीं है. ठीक है. सो दैट दिस इज शेड्यूल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम 5 February. दिस अलाइन विद द इवेंट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ बीइंग हेल्ड इन जयपुर, राजस्थान. इवेंट टिपिकली स्पान्स द सेवरल डेज एंड इंक्लूड द एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो. ठीक है. सो दिस विल बी द 12th edition. दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. Alright. So for its organization, CDSO and Lagu Udyog Bharti have recently signed the MOU. Next question है हमारा. In the Rajasthan government budget, the proposed maximum amount of the security coverage for international medal winner under the sport life was scheme में 25 लाख रुपए हैं. ठीक है. Rajasthan government has proposed a sport life insurance scheme. And it was under the scheme, international medal winner will provided with the maximum security coverage 25 lakh rupees. This initiative is step towards the encouraging the sport excellence and providing financial security. The scheme designed to ensure that athletes and their families have the adequate financial protections. Okay, so that was the significant amount ensuring a substantial safety net for the athlete during the emergency or the life-threatening situation. This amount reflects the government commitment to supporting sport athletes, providing them financial assurance. So this was the 25 rupees was for the government budget for this sports वालों को दिए जा रहे हैं. So this we complete.